अरे भाई सॉरी यार, पता नहीं कैसे स्ट्रीम एकदम बीच में रुक गई और अब हमें दोबारा से कंटिन्यू करनी पड़ी। अरे यार, मिशन को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। पूरी स्ट्रीम की माँ बहन हो गई, अच्छी खासी चलती हुई स्ट्रीम बीच में रुक गई कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और अब उस ग्लिच की वजह से हमें नुकसान होगा। खैर कोई बात नहीं, मेन बात यह है कि हमारी गेम वहीं से कंटिन्यू है जहाँ पे हमें इन पर्सन को चेस करना है। कम ऑन लेट्स गो, जल्दी से पकड़ दे इन्हें। यस आ जाओ, बढ़िया। वेल मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता क्योंकि ऑब्वियसली गोली चलाई तो ये मर जाएंगे, और अगर मैंने इनको मार दिया तो पुलिस पीछे पड़ेगी। गया भाई, सबसे पहले कुछ खाओ वरना मैं गया। ठीक है, बढ़िया, आ गई पावर, वापस आ गई। यार एक तो मैं इतने टाइम के बाद खेलता हूँ ना तो कंट्रोल भूल जाता हूँ हर बार। कम ऑन, गया अभी। Set. Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Bring him out here. Deputy? Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. चलो बहुत बढ़िया। वेल इन लोगों के लीडर को ढूंढ लिया मैंने, तो हमारा बढ़िया सा मिशन पूरा हो गया। चलो बढ़िया, लेट्स गो। All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. वेल तो जो डच है हमारी टीम का लीडर, उसने हमें कहा है कि हमें यहाँ पर वेपन यूज नहीं करने, एकदम क्लीन चिट होके रहना है और गुड बिहेव करके दिखाना है। और यहाँ पर जो ये इंस्पेक्टर हमें मिला है, ये हमें मुआयना करवा रहा है आसपास की एरिया का। एंड ऑब्वियसली फिलहाल हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि जिसे हमने पकड़ा है
उसे वहां पर अरेस्ट करवाएंगे। Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Carry him over then. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. This was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. वेल ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दोस्त था उसने हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और पकड़ा दी यहाँ पे। बेसिकली ये पूरा एरिया जो है कुछ बड़ी फैमिलीज के अंडर आता है, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम उन फैमिली से भी पंगे लेने वाले, और एंड में ये होगा कि उन फैमिली से पंगे लेने के बाद हम इस शहर को भी छोड़ देंगे। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हम हर एक चैप्टर के अंदर एक शहर छोड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल अगर मैं मैप पे जाऊं तो मेरे हिसाब से मैप थोड़ा अपडेट कुछ ज़्यादा हो जाना चाहिए। ओके अरे ठीक है, हाँ भाई हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये रहा स्ट्रॉबेरी टाउन। इस वाले टाउन पे तो हमने हमारे दोस्त मिखाइल को छुड़ाया था, जिसको हम माइकल बोलते हैं। ये है वैलेंटाइन वाला इलाका जहाँ पे हमने पहले अपना बेस कैंप डाला था, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर रोड्स। हमारा बेस कैंप आई डोंट नो किधर है, लेकिन हम रोड्स में ही अब हम सारा मैटर खेलेंगे। लेट्स सी। वेल मैप देखा जाए तो मैप जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है उतना बड़ा मैप है। ओहो ओके वेल अच्छा चलो ठीक है। एक बात तो है ना कि यार अभी टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं, और अगर 6 चैप्टर आने वाले हैं तो इतना बड़ा मैप तो बनता ही है। इसका मतलब अभी हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, तो भाई जल्दी टाइम वेस्ट करे बिना हम आगे बढ़ते हैं। How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? नहीं भाई, हम और काम कर सकते हैं। Don't think too hard. अरे भाई क्या लिखा है? एक्सेप्ट फिशिंग। चलो एक्सेप्ट करते हैं। Why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई साइड मिशन ले लिया है। चलो खैर अब ले लिया तो करना पड़ेगा।
फिलहाल हम फिशिंग करने जाएंगे। मेरा घोड़ा आ गया, सबसे बढ़िया दिखता है भाई मेरे घोड़ा। Follow me. चलो। So how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. चलो भाई जल्दी से हमें लेक तक पहुंचा दो, क्योंकि उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट मिशन पे जा पाएंगे। यार आज नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली स्ट्रीम भी रुक जाएगी। तो जो कि मेरा एम था इस सेकंड स्टार्ट हुई स्ट्रीम के अंदर, टेक्निकल ग्लिच के बाद जो स्ट्रीम स्टार्ट हुई उसमें हम टोटल 3 मिशन तो करें, जिसमें से 1 मिशन तो हो गया। अब जल्दी से 2 मिशन और करते हैं और उसके बाद हम आज की स्ट्रीम को एंड करेंगे। पर उन स्ट्रीम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we'd rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. This is the spot. Down to the left there. ओके ठीक है। वेल पहुंच गए हम ऑलमोस्ट, हमारी नज़रों के सामने ही है लेक। बढ़िया। I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Oh. Yes, over there on the shore. ओके वेल यहाँ पर थोड़ी बोट है। अब हम फिशिंग जो करेंगे वो नॉर्मली यहाँ से फिशिंग नहीं करने वाले। Come on. अब हम जाएंगे फिशिंग करने डीप वाटर में। चलो बोट खिसकाते हैं एंड डीप वाटर स्विमिंग करके आते हैं, और नॉट सॉरी स्विमिंग, एक्चुअली फिशिंग। All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. चलो बॉयज बढ़िया। Good fish. That'll do too. Keep going. वेल रात के खाने का इंतज़ाम हो रहा है और उस इंतज़ाम के लिए हम मच्छी पकड़ने आए हैं। वैसे आज हमारे आत्माराम के साथ संबंध बहुत अच्छे बने। अगर आपको याद नहीं आत्माराम कौन है, तो आत्माराम कोई और नहीं, हमारे घोड़े का नाम है। चलो ठीक है, हम पहुंच गए। Come on, Arthur. Don't be nervous. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one.
Lures it in then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. वेल ये लोग हमें सिखा रहे हैं जबकि मैं तो ऑलरेडी They're nibbling. There he is. एक बच्चे को फिशिंग करके दिखा रखी है कुछ भी मेरे को फिशिंग आती है Maybe if you caught a fish. कम ऑन कुछ निकला कुछ नहीं निकला वेल फेंको पहले क्या नहीं 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 पहले चार इस पे लगाओ कुछ ठीक है अब फेंकते हैं यस एंड नाउ लेट्स हैव फिश अटैक टू बेट while often nibble अच्छा ठीक Are है you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Something's nibbling. Got one. Ah, I should have had that one. Come on, Arthur. You can't go back empty-handed. कम ऑन यार मेरे को कोई मच्छी नहीं मिल रही यार मेरी कह सकते हैं फिशिंग रॉड की जो निप है वही नहीं रोटेट हो रही तो मैं कैसे मान लूं कि भाई कोई मछली आई है मेरे पास You got something biting, Arthur. आ गई आ गई आ गई That's on the hook, Arthur. There we go. Shit. Got away. कम ऑन ठीक है आजा 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 बहुत मुश्किल से पकड़ी आजा वेल ओके ठीक है आजा आजा थोड़ी सी दूरी रह गई बस अबे कितनी बड़ी मछली पकड़ ली मैंने ये तो आ ही नहीं रहा आ ही नहीं रही मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मछली नहीं मगरमच्छ है आजा आजा I got a bite. Ha! Got ya! कुछ ज़्यादा ही लंबी मछली पकड़ ली मैंने हाथ में ही नहीं आ रही है तो बस आ भी जा ठीक है ऑलमोस्ट पास में आ गए आजा आजा यार इतनी छोटी सी मछली ने इतने ड्रामे कर दिए आने में अब तो परछाई भी दिखने लग गई मछली कितनी बड़ी है छोटी सी ही है बस ठीक है आजा 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 यार डीप वाटर के अंदर थी ना इसलिए इसको खींचने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है चलो बढ़िया पकड़ ली There you go. Well done, Arthur. They can be a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur और मछली out पकड़नी है क्या fishing? He came back. यार ये हर बार ऐसे होता है कि जब भी हम मछली या फिर ऐसा कोई काम करने जाते हैं ना तो उसमें 3 मछली पकड़नी Don't पड़ती है think I do. क्या Oh, बैठे yeah. रहो You do. जब तक कोई He फंसती was नहीं है maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. फंस गई Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fish आजा, 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 calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Just gotta reel him in now, Arthur. कम ऑन बढ़िया है हमने I दूसरी used to मछली go है जल्दी fishing आजा with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley Okay, stands आ गई, up, आ गई, आ गई, आ takes गई, off his बढ़िया। hat, bows his head. Then sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. He replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years.
Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. Yeah, it's the spirit, though. Never lost the puppy in him. या फिर एक ऐसा काम करता हूँ. अब मेरे पास मछली तो आ गई है ना. अब हम अपनी फिशिंग रॉड के अंदर कुछ लगा के देखते हैं. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? क्या चलो ठीक है, हो गया, बहुत हो गया. चलो. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat, not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you. boys. चलो बहुत बढ़िया. वेल हमारे पास बोट है तो हम बोट को अपने कैंप के पास लेके जा सकते हैं क्योंकि हमारे कैंप के पास से ही लेक जाती है. और रही बात हमारे घोड़ों की तो वो अपने आप आ जाएंगे. बस ये थोड़ी धीरे चल रही है बोट. I couldn't wait till the taste was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Of course! Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? It is a bully boy come play. यार 5:30 बज गए. आओ एक मिनट, थोड़ी सांस लेने की जरूरत है हमें. एक बार नॉर्मली भी चलाते हैं, तेज नहीं चलाएंगे. वेल हमारे पास हमने शुरू करी थी अराउंड 4 बजे है ना. हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक का टाइम है, पर 5:30 बजे बज गए और हमारे 2 मिशन नहीं पूरे हुए. और अगर हम इस फिशिंग वाले मिशन को मिशन ना माने तो बस एक. चलो बहुत बढ़िया, बस पहुंच गए. ये रहा सामने हमारा कैंप, दिख भी रहा है मेरे को तो. यार बोट बहुत धीरे चलती है इस गेम में यार, थोड़ा तेज चलाओ. All right. I think I mean, we gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. ओके हमारा एक मिशन हुआ पूरा. यार मिशन पूरा होने का साइन तो आए. आ गया द न्यू साउथ. वैसे एक ही मिशन पूरा हुआ इतनी देर में. अब हमारे पास 3 नए मिशन आ चुके हैं, LSP एंड एक थोड़ा दूर है शायद GR. आई डोंट नो व्हाट इज GR. ग्रेस. अच्छा ठीक है. वेल वो जो हाई सोसाइटी के लोग या फिर हम कह सकते हैं हायर लोग थे जो इस पूरे एरिया को एक तरह से अपने काबू में रखते हैं, उनसे रिलेटेड एक मिशन है ये. मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ.
चलो यार ऐसा कहता है 5:30 तो बज चुके हैं और एक अच्छा खासा टाइम लगेगा एक मिशन को करने में, तो हम बस एक फाइनल मिशन करते हैं आज का और उसके बाद स्ट्रीम एंड करेंगे। एक तो यार अगर वो स्ट्रीम बीच में नहीं रुकी होती तो मे बी शायद हम आज का टारगेट पूरा कर लेते, पर अब क्या ही कर सकते हैं। And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. You coming with me then, woman? So Okay, I ठीक है। graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. वेल बेसिकली शायद ये वही लेडी है जिस लेडी को हमने सबसे पहले वाले मिशन के अंदर बचाया था, और अब ये लेडी कहना चाह रही है कि जब ये अपने हस्बैंड के साथ थी या फिर जब इसका हस्बैंड जिंदा था तब ये और इसका हस्बैंड हर एक चीज को बांटते थे, इवन हर एक काम को भी, और इसको हंटिंग करनी आती है, इसको अच्छे खासे काम आते हैं लड़कों वाले। ये यहाँ पर बैठ के बस कैंप के लिए सब्जियां नहीं काटेगी पूरी जिंदगी। वेल ये देख के हमें ऐसा लगा कि शायद इसको एक मौका देना चाहिए, हालांकि फिर भी हमें ऐसा अभी तक लग ही रहा है कि ये लड़की है और थोड़े टाइम के लिए एग्रेशन दिखा रही है, तो हमने इसको बोला चल हमारे साथ, तेरे को काम करवाते हैं अब हम बढ़िया वाला। नाउ लेट्स सी, अब हम इससे हंटिंग करवाएंगे, अगर इसने सही तरीके से कर ली तो फिर ये भी वो वाले काम करेगी, नहीं करी तो सिंपल सब्जियां काटेगी। बच के Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, there. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whatever we set up. चलो बहुत बढ़िया, पहुंच गए हम डेस्टिनेशन पे। Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. ओके ठीक है। वेल बेसिकली हम शहर आए हैं जहाँ पर ये महिला जो है वो कुछ खाने के लिए सामान खरीदेंगी और हम जो है चिट्ठी पोस्ट करके आएंगे। हमने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई अब हम थोड़े टाइम के लिए शूटिंग से या फिर किलिंग से छुट्टी ले रहे हैं। और छुट्टी क्या ले रहे हैं यार, हमारे बॉस का ऑर्डर है कि आप और कोई वायलेंस नहीं चाहिए उसे बिल्कुल भी, क्योंकि जितना वायलेंस होगा उतना हमारे यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा।
mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Okay, no trouble. Thank you. चलो बहुत बढ़िया, लेटर पोस्ट हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। Shambling around my backyard. बढ़िया है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। आई गेस लेडी ने सारा सामान भी भर लिया होगा। My sister's newborn had more strength than you, and he came out bright blue. I'm trying. Try hard. ओफो, कपड़े चेंज करे इसने। Some good news. I received a telegram that my father was leaving. What a relief. चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for the goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. चलो बहुत बढ़िया। वेल अब जबकि सीडैन कह रही है कि उसको खुद शिकार वगैरह करने आते हो, लड़कों वाले बहुत सारे काम आते हैं, तो चलो उससे ड्राइविंग भी करवाते हैं ना। And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I owned got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey, What you folks up to? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? अबे गन निकाल ली इसने, गन नहीं निकालनी थी भाई, गन अंदर रख। How's about this? वेल यहाँ पर कुछ लोग हमें छेड़ने आ रहे हैं और लैंड ऑफ आउटलॉ। अरे यार You could try shooting at him. What the hell was that? मारना ही नहीं था इन्हें बस। I'm gonna run this son of a bitch down. Watch your कुचल दिया भाई। Well, you wanted to see some action, lady. Now you वेल हमने अभी कहा था कि हम एक्शन से थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं, पर लगता है महिला जो है वो बहुत ही एग्रेशन में है और महिला नहीं चाहते बिल्कुल भी छुट्टी लेना। I don't remember asking you to prove. कम ऑन। Lady, you are enjoying Set this है। far too much. यार मेरी तो गोलियां भी खत्म हो गई, पिस्टल ले लेते चलो। See? Not many still standing now. That's how you want to do it? How are you not dead? कम ऑन बाहर निकल। अरे यार दूसरे वाले को लेते हैं। You run, you goddamn coward! चलो भाई We're good here, Arthur. Nice shooting. All right, I'll drive us back. What are you doing? We should get out of here. हाँ भाई बैठ गए। Those reins here. एक तो फंसा दिया उसके ऊपर से हम पे ही चिल्ला रही है। Caused enough trouble already. I'm अच्छा चलाना हमें, ठीक है। careful now. We showed those bastards, huh? वेल बेसिकली Not to get on your bad side. यहाँ पर जो है And it was clear हमने we पूरी played कोशिश करी कि हम लोगों को ना मारे, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा नेचर ही वो है, A lot of mess to make. बिना मारे हमारा काम हो ही नहीं सकता। Hope it don't bring anyone
you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. वेल महिला हमसे पूछते हुए कि क्या हम डच को बताएंगे, डच कैंप लीडर है और कैंप लीडर को बताया तो भाई वाट लगा देगा वो, क्योंकि उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि किसी को मारना नहीं है। नाउ लेट्स सी हम बताते या नहीं बताते। I wouldn't dream of it. वैसे मेरा मन तो नहीं बताने का, अगर मेरे पास ऑप्शन आया तो मैं नहीं बताऊंगा। No small name for myself. I won't be giving you no और इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़की है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। I just want to peek in that journal of yours. The mind of bones. Not a chance. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. That shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut ओके बहुत बढ़िया, एक मिशन और पूरा हो गया हमारा। अब हम जल्दी से सबसे पहले तो मैं लॉग बुक देखता हूँ। और ये क्या हो गया भाई कंट्रोलर को? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Hey, Arthur, what you want? वेल सबको मेरे से काम है, पर मेरे को काम है लॉग बुक से। अब इस मूवमेंट पे मैं लॉग बुक ढूंढ सकता हूँ क्योंकि अब सब कुछ स्टेबल हो चुका है। और ऑब्वियसली लॉग बुक मेरे को ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉग बुक से मैं फास्ट ट्रेवल वाली चीज़ अनलॉक कर सकता हूँ। बस एक बार पता चल जाए लॉग बुक पड़ी किधर होती है। वेल नहीं, इन महिला से बात नहीं करनी हमें। ओके ये रही आई गेस लॉग बुक। कम ऑन, नहीं यार ये तो लेजर है। वेल इसके अंदर जो भी हम कैंप पे कंट्रीब्यूट करते हैं ना वो यहाँ पे लिखा आ जाता है, पर यहाँ से तो नहीं होएगा। लेजर नहीं देखना हमें, कंट्रीब्यूट या लेजर नहीं यार। आई गेस बाय वाले ऑप्शन पे आएगा और इस प्लेस पे बाय वाला ऑप्शन है, वहां पे आगे। We're stuck in the ship now, Mr. Morgan. In the ship. We're drowning in mud. Hey, Arthur. For a man of the cloth, you have quite a way with words. Words are the very least of my problems. The very Yeah. least. So, I'm sure. is your people Jacobites or English lovers, Arthur? Peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside. नहीं यार मेरे को इसके वाला मिशन नहीं करना, साइड मिशन नहीं करना मेरे को। Just keep your cool, yeah? अरे नहीं यार, इसको एग्जिट नहीं कर सकते क्या? कैंसिल नहीं कर सकते इसे? जर्नल नहीं यार, एक बेमतलब वाला मिशन करना पड़ जाएगा मेरे को। एक बार यहाँ जाए, ये क्या चीज़ है? All right, let's do this. It ain't easy being me. ओके ठीक है, वेल कोई ख़ास चीज़ नहीं है। चलो अब मिशन स्टार्ट हो ही गया है तो कर ही लेते हैं ना, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद हम और कोई मिशन नहीं करेंगे, इसके बाद सीधे स्ट्रीम एंड होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो वही फास्ट ट्रेवल वाली चीज़ अनलॉक करेंगे, वरना फिर सीधा गेम आज की एंड करते हैं। Watch it! Look out!
यार एक तो ये साइड मिशन के चक्कर में मैंने इसकी बात भी नहीं सुनी सही से, तो मेरे को पता भी नहीं कि इस वाले मिशन के अंदर करना क्या है। कम ऑन लेट्स गो। पता है इस गेम के अंदर जो इसकी एक कह सकते हैं ड्रॉबैक है ना, वो एकमात्र यही है कि स्लो पेस पे चलती है गेम को, बस। और कोई गेम में दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स इसके बहुत ज़्यादा मस्त है, जो कैमरा मूवमेंट्स इसकी होती है एक्शन के टाइम पे वो भी बहुत बढ़िया है। गेम प्ले में मज़ा आ रहा है बिल्कुल, बस स्लो है बहुत। एंड येट कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्लो होने का कारण हम खुद होते हैं। तो मैं भी बहुत बार गेम खेलते खेलते हार जाता हूँ, बहुत बार मेरे को गेम में मिशन रिपीट करने पड़ते हैं। तो स्लो होने का कुछ कह सकते हैं श्रेय वो हमको भी जाता है। चलो बहुत बढ़िया। So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch is always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. Watch it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. Easy. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? Oh, what's that box by his tent for then? All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. वेल बेसिकली यहाँ पर इनकी बातों से एक बात पता चल गई कि ये लोग पैसे जिस तरह रखते हैं उसका सिस्टम क्या है। वेल उसका सिस्टम है कि जो भी पैसे हम लेके आते हैं, जो भी पैसे हमारे पास एक्वायर होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है कैंप पे और एक हिस्सा वो सारे लोग आपस में बांटते हैं जिन लोगों ने उस पैसे को गैदर करने में या फिर कह सकते हैं हेल्प करी होती है, मिशन किया होता है वो सारा मिलके जिन लोगों ने। और अगर हम बात करें कि कैंप वाले हिस्से का क्या होता है, तो कैंप वाला हिस्सा डच के अंडर होता है और डच उसको सेफ एरिया पे रखता है और उसका यूज सारा कैंप को और बेटर करने में होता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया पहुंच गए हम, ऐसा मेरे को लग रहा है। Look, there's one of them outside. This Okay. is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. ओके ठीक है। वेल यहाँ पर जो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ है उससे हमारा दोस्त जाके बात करेगा और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसकी माँ बहन हो जाएगी, फिर उसके बाद जाके हम ही बताएंगे। फिलहाल हमें बस बाहर रहना है और बाहर रह के निगरानी रखनी है। चलो कवर ले लेते हैं। Hey there! I'm gonna give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. It's a marker. Here come the rest of them. वेल बेवकूफ, चलो कोई बात नहीं। Coming out. हाय कम ऑन, जल्दी से गन निकालो। We got more coming out at once. गया गया गया, मर गया, Left of the house. गया। Look out on the right. Still got more inside. सेट, Come here, बहुत put your बढ़िया। hands up. Nice एक and पर्सन easy. बचा है बस। You saw what we did to your pals here. Okay.
ठीक है ठीक है ठीक है ओके If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. All right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. वेल ठीक है, इसने हमें एक लोकेशन बताई है कि यहाँ पर दीवार के पीछे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, पर कौन सी दीवार कौन सा हाथ, लेट्स सी क्या इसने सही इंफॉर्मेशन दी भी है या नहीं। यहाँ पे तो डबल एग्जामिन, Told you we take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. Huh? ओके शायद हम सही पहुंच गए, मिल गया। This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp. चलो बहुत बढ़िया। वेल हम भाषण दे रहे कि भाई पैसे जो तेरे को मिले उसमें से एक हिस्सा कैंप को भी दियो, पर हमने आज तक एक बार ही दिया है, वह जब मिशन ने हमें बोला है, उसके अलावा हमने खुद से स्व इच्छा से कभी नहीं दिया कैंप पे पैसे। वेल चलो क्या ही कर सकते हैं। एक मिनट, मिशन एक्टिवेट है क्या कोई? नहीं तो क्या मेरे को मेरे दोस्त का ही पीछा करना है? पीछा करते हैं यार, कहीं वो निकल ले, मेरे को तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। चल भाई चल, आजा, हमारे साथ ही आ रहा है ना। अबे दूसरी साइड गया यार वो। चलो उधर चलते हैं जल्दी से। कमॉन, पुलिस वाले आ रहे हैं भाई, पीछे लग रहे पुलिस वाले। वेल मैप में नहीं दिख रहा हमें हमारा पर्सन, इसका मतलब ये है कि अब वो अकेला जाएगा और हम अलग, पर सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो स्क्रीन पे पीछा करते हैं उसका। नहीं चलो छोड़ो यार, उसको जान दो। हमारे मिशन जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और हमारे नेक्स्ट मिशन दोनों के दोनों इसी जगह पे हैं। ठीक है, फिलहाल हम कैंप जाते हैं और कैंप जाने के बाद मिशन स्टार्ट नहीं करेंगे, सीधा कैंप जाएंगे, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं यार, कैंप इधर नहीं है, कैंप तो हमारा यहाँ है। और फास्ट ट्रैवल कैसे करना है वो मेरे को पता नहीं, तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके अपने प्लेयर को पार करते हैं और आज की स्ट्रीम को एंड करते हैं फिर। बढ़िया, लेट्स गो। आज इससे ज़्यादा कोई मिशन नहीं होने वाला, तो अगर कोई स्ट्रीम देख रहा है और कोई चाहता है कि वो स्ट्रीम एंड करके जाए तो वो जा सकता है। हम बस स्ट्रीम की लेंथ लंबी कर रहे हैं और हमारे मेन प्लेयर को उस लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं, जिस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्ट्रीम में और डायरेक्टली हम मिशन स्टार्ट कर पाएंगे। इतने मैं बताता हूँ कि आज की स्ट्रीम के अंदर हमने क्या कुछ अचीव किया। वेल सबसे पहले अचीव करने से ज़्यादा तो हमने खो दिया, क्योंकि आज की स्ट्रीम के अंदर जो है हमारा मकसद था हमें चैप्टर 2 ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, जो कि हमने किया बहुत बेहतरीन तरीके से। पर चैप्टर 2 के एंड में कुछ ऐसा हो गया जो कि दुखद था बहुत, और वो ये हुआ कि हमने वैलेंटाइन शहर के अंदर जहाँ पे हम रोटी कमाते थे उधर ही हमने आतंक फैला दिया, जिसकी वजह से वहाँ के सब लोग हमारे पीछे पड़ गए और अब हमारे सर पे इनाम है अगर हम वैलेंटाइन शहर जाएंगे तो, जिसकी वजह से अब हम वैलेंटाइन तो जा नहीं सकते, तो हमने वो एरिया ही छोड़ दिया अपने पूरे बेस कैंप के साथ और अब हम आगे हैं रोड्स नामक एक शहर में। वेल रोड्स नामक शहर में आने के बाद अब हमने सबसे पहले यहाँ की जगह इन्वेस्टिगेट करी, यहाँ की पुलिस वालों के साथ बातचीत बनाई और अब हम यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल यहाँ आने के बाद हमारा बस एक ही मिशन पूरा हुआ है, क्योंकि वो एक मिशन ही बहुत लंबा था। और देखा जाए तो इस चैप्टर 3 के अंदर टोटल 17 मिशन है, और 17 में से हमने बस एक ही किया है, विच मीन 16 मिशन अब भी रहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इन मिशन को करेंगे हम आने वाली स्ट्रीम में। आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग इस पिछली वाली स्ट्रीम के अंदर आए थे, जो कि ग्लिच होने से पहले या फिर हमारे ऑफलाइन जाने से पहले हुई थी, तो प्लीज़ वो 2 स्ट्रीम को चेक कर लें, क्योंकि आज एक ही बार 2 स्ट्रीम हुई हैं। चलो बाय बाय।